about application of patents that covers section 6 to 11 and rules 10 to 15. Today I will brief you about the patent procedure, who can apply for the patents, type of patent applications and content of the application, foreign application, and priority date of the claims. So first of all, we'll learn about what is the patent procedure. So basically there is two types of application. First is the provisional application followed by the complete application. And second is the complete application. You can have a look on a book number, page 7 on the book that mentioned the flowchart of the patent registration in India. So if we have filed a provisional application first, after that we have to file a complete application within 12 months of time. The second way is directly file a complete application. After filing a complete application, your application will publish after 18 months from the date of the filing. There is a way for the early publication by filing Form 9 and the prescribed fees in the first schedule. If you have applied for the early publication, your application is published within 1 month of time. After the publication, there is examination of the application. Examination request you have to file within 48 months from the date of filing of the application. 48 months start from the filing date of your application. Without filing examination request, your application will not be reviewed by a patent office. There is a two type of examination request, by filing Form 18 and by filing Form 18A. Form 18 is for the regular examination and 18A is for the expedite examination. Followed by a response of to examination report. After issuing a FER, we have to answer that FER within 6 months of time. If we require more time for the answer, we can extend this time limit by 3 months by filing Form 4 and prescribed fees in the Schedule 1. After the examination report, if controller thinks that all the objections are satisfied, then they directly grant your application, or else they issued a hearing notice. After the hearing, you have to submit the written response in 15 days. You can adjourn the hearing twice. After the hearing and the written response, your application will grant or it may reject. So this is the basic patent procedure. I hope it is clear to everyone. Anyone have any question? You can ask in this. Excuse me, ma'am. Yes. मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो FER हम फाइल करते हैं तो उसका, हाँ जी, तो उसका जो रिस्पॉन्सिंग टाइम होता है कि हमें कितने टाइम में उसको फाइल करना होता है, उसका रिस्पॉन्स कितने टाइम में मिलता है, मैम प्लीज टेल मी. ओके, अगर आप बात कर रहे हो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होने के बाद, हाँ जी, आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होता है, उसके वो डेट से आपको विदिन 6 मंथ्स वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट का आंसर फाइल करना पड़ेगा. दैट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट. ओके. अगर ड्यू टू सम रीजंस आप वो फाइल नहीं कर पा रहे हैं विदिन 6 मंथ्स, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है, तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं बाय फाइलिंग Form 4. दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ टाइम. ओके, मतलब एक्सटेंड हो सकता है 3 मंथ्स के लिए. यस यस यस.
ओके मैम 3 months आप मतलब total you will Change get कर it 9 सकते हैं। months. या ठीक है Okay. मैम ओके या ओके Then when is the report available to the applicant? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. When is the examination report available to the applicant? When is the examination report? Sir, didn't get your question. Sorry. Hello. 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 Yes. When is the applicant will get the examination report after the request of expediting for Okay. examination? You are talking about examination report कब issue होगा? Right. Yes. If you are filing expedite examination request, that is Form 18A, you will get examination report within 3 months of time. And if you are filing a regular request, that is Form 18 only. अभी पेटेंट ऑफिस का बैकलॉग है, आइडियली उनको 6 months में इशू करना पड़ता है, बट ड्यू टू बैकलॉग वो टाइम लेते हैं. जैसे सीक्वेंस में जब आप एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट के लिए फाइल करोगे तब एक नंबर जनरेट होता है, वो सीक्वेंस में आपका नंबर आएगा तब आपके पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिन होगी एंड देन इट इज इशूड. Okay, The madam. examination report is issued. Yeah, thank you. Okay. Ma'am, a follow-up to this question. Yeah. Suppose the request to submit the response for the FER, 3 months extension is also got over, but we didn't file the response to the Indian Patent Office, and automatically the controller will get that application into the abandoning stage. Is there Yeah. any chances or options are available? Can we make that application into active or bring it into the responsive stage once the application into the abandoned and 3 months extension period also got over? There is no way to extend that. Your application is abandoned if you are failing to file the response within the prescribed time limit. Okay. इसी pandemic time में कुछ options है क्या मैम? Because of the pandemic and this situation, is there any? There is उस टाइम पे अलाउ किया था पैंडेमिक सिचुएशन में एज पर द उनका जो रिजोल्यूशन आया था उसमें उन्होंने अलाउ किया था कि आपका अगर फाइल नहीं हो सकता तो यू कैन फाइल इट लेटर ऑन, बट अभी वो सारी चीजें क्लोज कर दिया, अभी हम लोग रेगुलर में शिफ्ट हो गए हैं. ठीक है. मैम हम कितने बार एक्सटेंड करवा सकते हैं ये मतलब 3 months का जैसे एक एक्सटेंशन मिल गया उसके बाद वापस से फॉर्म 4 भर के ऐसे कितने बार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दिस इज ओनली वंस. ओके, सो टोटल 9 months मिल सकते हैं एट द मैक्स अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिस्पॉन्स करना है तो. या करेक्ट. ओके. So now moving towards the section 6. Section 6 is a person entitled to apply for patent. अभी इसमें कौन कौन पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है? That is first is true and first inventor, true and first inventors assignee, legal representative of any deceased true and first inventor or his or her assignee. अभी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है तो आप बताइए मुझे ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर क्या होता है? True and first inventor is the inventor himself. ओके. And या तो वो जिसको असाइन करता है अपना इन्वेंशन, असाइनमेंट डीड करना पड़ता है उसके लिए, असाइनमेंट के लिए उसके थ्रू अगर कुछ होता है तो असाइनी को जाएगा, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मे बी लीगल एयर जो भी होगा वो इन्वेंटर का उसको. ओके Ma'am, true and first inventor is the person who first came up with the idea and he first filed for the application for that particular invention. करेक्ट करेक्ट. अभी आपको सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, ये कौन से सेक्शन में फॉल होता है? Ma'am, it comes under
in definition, true and first inventor की definition में दिया हुआ है in section 2 Why subsection it 1 is. and y clause. ओके, करेक्ट करेक्ट। आपको बुक में से देख के नहीं करना है, नहीं ये याद रहना पड़ चाहिए। नहीं मैम बुक से नहीं है। ओके, इसमें एक और डेफिनेशन हमको याद रखनी है, दैट इज असाइनी ऑफ द असाइनी। नाउ व्हाट इज असाइनी ऑफ द असाइनी? अगर स्टूडेंट लेवल पे आपने एप्लीकेशन फाइल की है, तो आपका जो असाइनी होगा दैट इज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इफ योर एप्लीकेंट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि आपने कॉलेज ने फाइल की है एप्लीकेशन, राइट? सो अभी आपकी कॉलेज आपकी जो एप्लीकेशन फाइल की है उसको फर्दर किसी और को असाइन कर रही है, किसी कंपनी को या स्मॉल एंटिटी को या किसी को भी, देन this application is known as assignee of the assignee. I hope it is clear to everyone. Assignee of the assignee. Here one Yes, question. ma'am. Is it the only from the educational institute to transfer the rights to the corporate, or corporate to corporate will also name it as assignee to assignee? Assignee to assignee. Correct. Madam, here one question. Yes. The assignee finds another assignee. Will the true and first inventor has to be informed or got approval? No, because true and first inventor is already assigned the right to the first assignee or the applicant. So the assignee is at full liberty to assign again, right? Assignee is eligible to assign anyone. Assignee or the applicant is the owner of the application. They can do anything with that. Okay, well clear. Thank you. Yeah. Now, section 6(1) says that subject to the provisions contained in section 134, an application for a patent for an invention may be made by any of the following persons. Now the question comes, what is section 134? हम section 134 check कर लेते हैं. So section 134 is notification as to country not providing any reciprocity. अभी हम short में बताए तो section 134 says that if the foreign applicant filed an application in India, for that the foreign applicant की registered office इंडिया में होनी चाहिए, या तो फिर कोई भी उसका रेसिडेंशियल प्रूफ इंडिया का होना चाहिए, then only they can file the application, or else the foreign applicant को attorney hire करना पड़ेगा इंडिया में, that is a legal representative of the assignee. So उनकी जो भी एप्लीकेशन होगी, फॉरेन एप्लीकेशन इन इंडिया जो फाइल होगी, that is completely treated as a Indian application. At the same way, अगर कोई इंडियन फाइल कर रहा है यूएस में, तो उनकी भी जो एप्लीकेशंस है वो यूएस एप्लीकेशन की जैसे ट्रीट होगी. ये कह रहा है सेक्शन 134. ओके. Now that is national treatment, I think. National right? treatment. It's an international application. We have already discussed about the true and first inventor, assignee of that, and legal representative. Now, 6 subsection 2 says that an application under subsection 1 may be made by any of the person referred to therein, either alone or jointly with any other person. मतलब हम ये नहीं कह रहे कि एक ही बंदा कर सकता है. आप जॉइंट में मतलब एक या दो बंदे या 3 बंदे कंबाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो. ठीक है. You have to remember this definition: 21Y, 21AB, 21K, and section 34. Now, 7.
Section 7, form of application. मैम वो Yes. सेक्शन 6(2) जो था उसमें one individual can also file with some company like in collaboration, right? Yeah, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं. Okay, thank you. Okay. Form of application. अगर हम application देखें तो there is a total 5 type of applications. One is the ordinary application, second is the conventional application, third is PCT application, that is considered as an international application, fourth is the divisional application, and fifth is patent of addition. अभी हम जो भी application की बात करेंगे, that is the ordinary application that described in the section 7. So form of application. Sorry. Every application for a patent shall be for a one invention only, shall made in the prescribed form, that is form 2, and filed in the patent office. कोई भी application file करेंगे, that has to be for the one invention only, single inventive steps over there. Prescribed form, that is form 2, I will show you in the further slides, and filed in the patent office. अभी इंडिया में कितने पेटेंट ऑफिसेस है? टोटल 4 पेटेंट ऑफिस. किसी को ज्यूरिडिक्शंस पता है? कौन से पेटेंट ऑफिस का ज्यूरिडिक्शन कहाँ लगता है? Anyone knowing the jurisdiction for the particular patent office? Yeah. Southern regions Chennai, western regions Mumbai, eastern regions Calcutta, and northern regions is Delhi. Okay, done. Correct. So आपका जो एप्लीकेंट का जो एड्रेस है, जो आपने मेंशन कर रहे हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, वो एड्रेस अगर न्यू दिल्ली का है या तो फिर पंजाब का है, तो वो एप्लीकेशन आपकी डायरेक्टली फाइल होगी दिल्ली में. ओके. हाँ. ये क्या कह रहा है? Every international application under the Patent Corporation Treaty for a patent as may be filed designated in India shall be deemed to be an application under this act if a corresponding application has also been filed before the controller in India. So section 7(1)(a) says that कि कोई भी PCT application है, international application, जिसको आपने इंडिया को डेजिग्नेट करके फाइल किया है, that is considered as an Indian application only. Right. उसके जितने जो रूल्स है वो एट द टाइम ऑफ पीसीटी जब स्टडी होगा आपका उस टाइम पे कवर होंगे. दैट इज रूल 17 to 23. Ma'am, you previously mentioned about those jurisdictions. A patent agent will not be limited by jurisdictions, right? He can like take cases from any state. Any state. उनको कुछ नहीं है, मतलब उनका कोई जुरिडिक्शन नहीं लगेगा उनको. वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्लाइंट का काम कर सकते हैं कहीं से भी. ठीक है. Ma'am, the application which the applicant is filing a particular jurisdiction like Chennai and Mumbai and Delhi and Kolkata, the application will directly go to the as per the applicant address or the inventor address, ma'am? एप्लीकेंट एड्रेस. Applicant address. Okay. एप्लीकेंट एड्रेस कंसीडर होता है इसमें. और इंडिया में सारी पेटेंट ऑफिस को लिंक किया हुआ है. एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपका कोई भी पेटेंट ऑफिस से आ सकता है, बट यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन द फाइलिंग ऑफिस ओनली. Okay, but we can get the examination report from the any one of the 4 offices. Any one of the offices, right? Okay. बट अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्व करने की बात करे कि यू हैव टू सबमिट दिस पावर ऑफ अथॉरिटी फॉर दिस एप्लीकेशन, अगर आपका जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है दैट इश्यूड फ्रॉम द चेन्नई, बट यू हैव अप्लाइड फॉर द पेटेंट इन द मुंबई पेटेंट ऑफिस, then you have to submit that power of authority or any of the document in the Mumbai only, Okay. not in the Chennai. Okay. Okay. This is for the knowledge purpose. Okay. Okay. Right.
Now, Ma'am, sorry, but I just wanted to confirm this. Like, if we are submitting power of attorney, say I am working from Maharashtra and my client is from Gujarat, then whose power, like the stamp on power of attorney will be from which state? पर्टिकुलर स्टेट सपोज हम गुजरात में हैं, आप महाराष्ट्र में हो, पावर ऑफ अथॉरिटी महाराष्ट्र में 500 के स्टैम्प पेपर पे जाती है, और इन इंडिया सॉरी इन गुजरात दैट इज 300 स्टैम्प पेपर, सो 300 स्टैम्प पेपर वैलिड रहेगा. Okay, okay. Okay. So now move towards our section 7 subsection 1b, that is a filing date. Filing date of the of an application referred to in subsection 1a and its complete specification processed by the patent office as designated office or elected office shall be the international filing date accorded under the PCT. अभी आप बोलेंगे फाइलिंग डेट कौन सी रहेगी मेरी अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल की है तो. सो फर्स्ट, जिस दिन पे हम प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, दैट इज माय फाइलिंग डेट ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. If I am filing the complete application, the date of filing is my filing date of the particular application. In case of PCT, जिस दिन पे PCT application file हुई है, that is my filing date. That is also considered as an international filing date. Right? Now coming towards the section 7, subsection 2. That says about the proof of rights. Proof of rights is a form 1 that we have to furnish within 6 months of time after filing the application. Where the application is made by virtue of an assignment of the rights to apply for a patent for the invention, that shall be furnished with the application or within such period as may be prescribed after the filing of the application. Proof of the right to make the application. So rule 10 of proof of the right, form 1, which we have to submit within 6 months of time. अगर हम application file कर रहे हैं as an for the natural person, the fees is 1600 and for the large entity 8000. अब अभी जो जितने भी rules amend हुए हैं in the latest amendment, there is only 2 category for the fees. That is, one is for the natural person, that comes under MSME, SMEs and small entities, everything. And for the second category is the large entities. Okay. Now, the third is every application under this section shall state that the applicant is in possession of the invention and they shall name the person claiming to be the true and first inventor. And where the person so claiming is not the applicant or one of the applicants, the application shall contain a declaration that the applicant believes the person so named to be the true and the first inventor. अभी इसमें क्या होगा, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अगर अप्लाई कर रहा है पेटेंट के लिए और वही एप्लीकेंट है, तो आपको डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है. बट इन द केस वो दोनों लोग डिफरेंट है, देन यू हैव टू सबमिट द डिक्लेरेशन. अगर आपने फॉर्म 1 देखेंगे तो फॉर्म 1 में क्लॉज 12 के अंदर उसमें वहां पे मेंशन किया हुआ है कि डिक्लेरेशन बाय द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर दैट सेज दैट वी आर द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अगर एप्लीकेंट एंड इन्वेंटर सेम है तो उनको सिर्फ फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा और वो काम हो जाएगा. इफ बोथ आर द डिफरेंट पर्सन, देन स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूशन होगा कि इन्वेंटर जो है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, वो उनके राइट्स असाइन कर रहा है एप्लीकेंट को. राइट? आई होप दिस इज क्लियर.
and the declaration is in the stamp paper of the particular state. Now the 4 is every such application shall be accompanied by a provisional or a complete specification. We are talking about the ordinary application. Only ordinary application में ही होगा कि हम provisional file कर सकते हैं, provisional followed by the complete application. Conventional application and PCT application, we have to file direct complete specification only. Ma'am, I have a doubt. Yeah. मैम हम फॉर्म 5 कब फिल करते हैं, किन केसेस में? फॉर्म 5 जो है वो हमें फॉर्म 5 हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल करना पड़ता है. अगर हम फॉर्म 5 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं फाइल कर रहे तो वी हैव टू फाइल फॉर्म 4 विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस विद इन 1 month ऑफ टाइम. वो आगे आएगा आपका, मैं वहां पे कवर करूंगी. ओके. हमने बात की थी फॉर्म 2 की. सो फॉर्म 2 इज लुक्स लाइक दिस. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रहा. So Form 2, Patent Act 1970, the patent rule. If it is complete specification or a provisional specification, title, applicant and its address. In case of provisional specification, the statement is the following specification particularly describe the invention and the manner in which it is to be performed. And in case of complete specification, the line is changed. The following specification fully and particularly describe the present invention and manner in which it is to be performed. This is the difference between provisional and complete specification. As we mentioned about the forms of application, ordinary, convention, and the PCT application, the same ordinary application is there in the US and EP laws also, or only Indian patent law will have the provision of ordinary application, or every other patent countries is also having the similar ordinary application? What I remember is in the US there is a provision for the provisional application. I have to check for the Europe. But the ordinary application is only mentioned in the people for the using countries only. Okay. For the particular countries, specific country specific रहती है वो. Okay. Just can you show me the previous slide? Sure. This? Yeah. Yes, ma'am. Okay. जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग का सेक्शन आएगा आपका, दैट इज पेपर 2. In that you have to draft these things too before starting drafting. And madam, one doubt, madam. This Yes. provisional, when you are submitting provisional application, there is a fee also, right? And then a complete specification. Sorry, pardon. एक सेकंड. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है. Hello. Yeah, in the case of provisional specification application, there is a fee involved, right? And also, when you are following it up with complete specification, there is again a fee you have to pay. I will explain this. When you are applying for the provisional application, you have to draft only 3 things basically. First is the title, field of invention, background of invention, and your detailed description. कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि आपको claim 1 भी एटलीस्ट ड्राफ्ट करके रख लो just because of the priority date. अब जब आप application फाइल करोगे, at that time you have to pay a government fees. That is, if you are a natural person category, then you have to pay 1600 rupees, right? अब आप complete specification फाइल करोगे. Complete specification contains everything like title, field of invention, detailed description, summary, drawings, claims, abstract. At that time,
आपको फाइलिंग फीस पे करनी नहीं पड़ेगी, बट if your claims are more than 10, then you have to pay the government fees for your each claims. And if the number of pages exceed from the 30, then again you have to pay for that particular page. Okay, madam. Okay. Thank you. Understood, madam. Okay. Just follow up this question as you mentioned, when you filing the provisional application, will whether you're going for PC or non-provisional application, automatically the priority date will comes under the application when you enter into the Indian Patent Office, right, ma'am? Whether you are a provisional application without claims or with claims, does not matter. Does not matter, but Okay. It is advisable to draft one claim. It is just advisable to draft. Okay. Okay. वो भी आगे कवर होगा, हमारा सेक्शन 10 कवर कर रहा है वो, कि आपका प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स क्या रहेगी. सेक्शन 10 और मे बी 11 कवर कर रहा है. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. सेक्शन 8, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन, इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन. अभी इंडियन पेटेंट ऑफिस क्या कह रही है कि आप फॉरेन में एप्लीकेशंस फाइल करिए, बट हमें इन्फॉर्म करिए कि आपकी फॉरेन एप्लीकेशन का क्या हो रहा है, वहां पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन आया है, कुछ भी वहां पे प्रोसेस हुआ है, दैट यू हैव टू इन्फॉर्म अस. कब तक आपको इन्फॉर्म करना है? जब तक इंडियन एप्लीकेशन ग्रांट नहीं हो जाती. ठीक है. That information you have to furnish in Form 3 without fees and within 6 months of time. अब सेक्शन पढ़ते हैं. When an applicant for a patent under this act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent or substantially the same invention or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the controller may allow a statement setting out detailed particulars of such application and undertaking that up to the date of grant of patent in India, he would keep the controller informed in writing from time to time of detailed particulars as required under clause A in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India, subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause within the prescribed time. The prescribed time is 6 months. ठीक है, जो हमने अभी बात की वही चीजें यहाँ पे उन्होंने लिखी है. Now, 2 is at any time after an application for patent in India until the grant of patent or refusal to grant of a patent made thereon, the controller may also require the applicant to furnish details as may be prescribed relating to the processing of the application in country outside India. And in that event, the applicant shall furnish to the controller information available to him within such period as may be prescribed. The same चीज यहाँ पे बोली है कि आपकी ग्रांट होने से पहले तक या रिफ्यूज होने के पहले तक you have to furnish the development of your foreign application by filing Form 3 and Rule 12. The Rule 12 एक बार देख लेते हैं. बुक में पेज नंबर 180.
the statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under subsection 1 of section A shall be made in Form 3 that we have discussed. 1A is stating that the period within which the applicant shall file the statement and undertaking under subsection 1 of section 8 shall be 6 months from the date of the filing of the application. Explanation is, for the purpose of this rule, the period of 6 months in case of an application corresponding to an international application in which India is designated shall be reckoned from the actual date on which the corresponding application is filed in India. 2 is stated that the time within which the applicant for a patent shall keep the controller informed of the details in respect of other application filed in any country in the undertaking to be given by shall be 6 months from date of the filing. Okay. When so required by the controller under subsection 2 of section 8, that is 8.2, shall be furnished information relating to objection, if any, in respect of the novelty and patentability of the invention and any other particulars as the controller may require, which may include claims of application allowed within 6 months from the date of such communication by the controller. अगर आप ये फाइल नहीं करते तो क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन, ये जो सेक्शन है वो आपका रिवोकेशन ऑफ पेटेंट में भी कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज वन दैट इज कम्स एन ऑब्जेक्शन फॉर द रिवोकेशन. So you have to furnish these details to the controller. Okay, what is the status of your foreign application? Okay. Is it clear to everyone or any question? From this information undertaking regarding the foreign application, in the if your examination report may be एक objection लिखता है मैम or in the examination report? Yeah. It will be there in the examination report. Yes. वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब भी इशू होता है तब वो ये ऑब्जेक्शन आता है, फॉर्म 3 सबमिट करो, फ्रेश फॉर्म 3 यू हैव टू सबमिट एट दैट टाइम. इफ यू और अगर आपने फॉर्म 3 आपने फॉरेन में एप्लीकेशन फाइल की है एंड विदिन 6 months और फ्रॉम द फाइलिंग डेट ऑफ द फॉरेन एप्लीकेशन आप अगर सबमिट नहीं कर रहे हो ये डिटेल इंडिया में, तो यू हैव टू फाइल अ पिटीशन फॉर दैट कि आपने क्यों ये डेटा सबमिट, क्यों ये इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं. ठीक है, अंडरस्टूड. If you are going for a foreign application within the 6 months from the date of filing of the foreign application, you have to inform the controller. Otherwise, you have to file the petition if you miss that with 6 months timeline from the foreign application. Correct. Ma'am, if we are not filing any foreign application, then also do we have to file this form? Yes. At that time you have to mention not applicable. Like आपको फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म आप देखेंगे फॉर्म 3, तो उसमें एक बॉक्स बना रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन डेट क्या है, फॉरेन एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसकी स्टेटस क्या है. इन दैट यू हैव टू फिल NA और nothing like cross कि we have not filed the foreign application for the Indian application. Okay. Hello. And ma'am, about petition, is there any form for that? Form 30. Oh. मैम जैसे आपने बोला कि फॉरेन में हम फाइल करते हैं तो हमें यहाँ कंट्रोलर को भी उसका जो प्रोग्रेस है वो हमें बताना पड़ता है. ठीक है. तो उसका कोई टाइम लिमिट है, मतलब वहाँ पे जो डिसीजन है उसके 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर, ऐसा कोई टाइम लिमिट है या फिर? नहीं, वहां पे जो भी प्रोग्रेस आपका चेंज हुआ रिपोर्ट इंडिया में वो डेट से लेके 6 months के अंदर आपको सबमिट करना है. ओके. और ये इंफॉर्मेशन कब तक सबमिट करनी है? इंडियन एप्लीकेशन ग्रांट हो जाने तक या रिफ्यूज हो जाने तक. ओके. जब तक हमारा यहाँ का डिसीजन नहीं होता तब तक. यस, तब तक आपको फर्निश करनी है. वही चीज यहाँ पे लिखी है. अब देखिए तो 2 में हम देखेंगे
अगर आप एक टू हम पढ़ेंगे तो वो क्लियरली स्टेटिंग दैट एट एनी टाइम आफ्टर एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट इज फाइल्ड इन इंडिया until the grant of the patent or refusal to grant of the patent made thereon, the controller may also require the applicant to furnish these details. ठीक है? Okay, thank you. Okay. Ma'am, again, why do we do this at first place? In first place, like, why do we have to submit all these forms to Indian office? क्योंकि आपका इन्वेंशन है, इंडिया का इन्वेंशन है ये, ठीक है? सो आप इंडिया में इसका मैं सिंपल वे में आंसर करेंगे कि हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन हम बाहर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां पे क्या प्रोग्रेशन है, अगर वो ग्रांट कर रहे हैं या वो रिफ्यूज कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी इंडिया में कंसिडर होता है। जो हमने रूल 12 स्टडी किया अभी, जिसमें मेंशन किया है कि अबाउट द प्रोग्रेशन, दैट इज लाइक कि आपका नॉवेल्टी है और पेटेंटेबिलिटी है, वहां पे कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो भी इंडिया में रिव्यू होता है कि वहां की एप्लीकेशन का आपका क्या है। मैडम दूसरा रीजन भी है उसमें, और कुछ फॉरेन में आप कुछ सेंसिटिव इन्वेंशन बाहर निकलता है तो इंडिया का कुछ अफेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, वो चीज दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज कम्स अंडर द सिक्रेसी डायरेक्शन। हाँ, वो बाद में आएगा। हमारा सिक्रेसी डायरेक्शन में जो भी इन्वेंशन है वो पब्लिश भी नहीं होता है। To add to your point, there may be scenarios if you file a foreign application, same is also in the Indian application. Foreign is US is given the grant, India is rejected. Yes. But US में patentability criteria meet कर रहा है, but India में नहीं meet कर रहा है. Except I'm not talking about the pharmaceutical and biological. Yeah. So for tracking those details, maybe the Indian Patent Office will ask those details of the foreign and foreign application information. Correct. That may be the scenario. Correct, because the applicant may go for appellate board. This application is filed granted in the US. Why not in India? Well, in case if I'm filing any application and it falls under section 3, which is not patentable, or section 4 तो out of question ही है, लेकिन section 3 के अंडर आता है, तो इंडिया में वैसे भी मिलना नहीं है. But in other country, if they have that provision or they allow for that application, then it may go to grant, right? So इंडिया में फर्क क्या पड़ जाएगा अगर ये फॉर्म में अगर अपन अपडेट भी करके दे रहे हैं कि वहां पे ग्रांट हो गया, अपने आप पे तो होने ही नहीं वाला कुछ भी करे. So what's the meaning that we are giving all the updates to Indian Patent Office? That is what like I wanted to ask. Correct your question, but हम भी फाइल करते तो हमें भी कई बार होता है ऐसा. One information ma'am told that because the India originated inventions is going to taking the protection in US, it is very important to know the Indian government, what are the informations, intellectual information going to getting the protection. And other information, other point is the Indian Patent Office also some type of a consciousness, or they'll be keen looking on what happening the same invention outside the India. Maybe they are looking into for some changes they can make in future. Maybe. Correct. And another is they have developed the PPH route, if you are aware about that. Madam, in this case, a person is not divulging the invention or applying for patent in India, but only chooses to apply foreign. Okay, what is the government can say on this? अच्छा, आपका आवाज है ना बहुत ही ब्रेक हुआ, मुझे सुनाई नहीं दिया. Pardon. Madam, please repeat the question. Yeah, I will repeat the question again. And in the case an applicant doesn't want to file for patent in India, but outside India, then what can the government or the patent office can do in this case? Correct. I will answer your question. अगर आपको ये एप्लीकेशन इंडिया में फाइल ही नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया फाइल करनी है. इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, as per the Indian criteria, your application is not going to patent, not going to grant, right? So in that case, you have to take a permission from the Indian government. वो हमारा एक चैप्टर में कवर होता है.
Okay, madam. ठीक है. That is, I think it's covered in the Section 39. 39, yes. Filing the application outside India. The Indian government से आपको permission मिलेगी 21 days में. आप ये application file बाहर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. ये आपको बताना इसीलिए जरूरी है कि if you are filing any secrecy direction related inventions, so India की कोई secrecy बाहर ना चली जाए. That is the only reason you have to inform. Correct. I And think we if have you to are take the FFP, right, ma'am, for the foreign filing permission. हाँ, फॉरेन फाइलिंग परमिशन लेनी पड़ेगी. वो आपको 21 डेज में मिलेगी. और अगर आपको परमिशन नहीं लेनी है तो फाइल अ प्रोविजनल एप्लीकेशन इन इंडिया आफ्टर द 4 weeks or 6 weeks. I have to check that timeline. I think it's 6 weeks. After the 6 weeks, you can directly file your application to any foreign countries and abandon your provisional application in India. Don't file a complete application. It is not mandatory to apply and get patent in India, right? It is not mandatory, but you have to apply for a permission. Okay, that's understood, man. Okay, done. So now moving towards the section 9, that is provisional and complete application. So इसमें 4 parts है. That is provisional application to the complete application. 1. Secondly, if you have filed 2 or more provisional application, every application is related to single invention. Then you can file one single application, one single complete specification. Third is the antedating, and 4th is the post-dating. Now हम एक-एक करके देखते हैं इसको. Sorry. When an application for patent not in the conventional and the PCT is complied by a provisional specification, a complete specification shall be filed with the date of filing of the application. And if the complete specification is not so filed, the patent application shall be deemed to be abandoned. अगर आप 12 months में ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं प्रोविजनल के बाद कंप्लीट, तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडेंट हो जाएगी. अभी इसमें एक कैच है कि आप एप्लीकेशन को 6 months तक एक्सटेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट योर प्रायोरिटी डेट विल बी शिफ्टेड, राइट. Second, where 2 or more applications in the name of a same applicant are complied by a provisional specification in respect of invention which are cognate or of which one is a modification of another, and the controller is of opinion that the whole of such inventions are such as to constitute a single invention and may properly be included in one patent, he may allow one complete specification to be filed in respect of all such provisional applications. Now the question comes, अगर मैंने एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की है विद इन 12 months ऑफ टाइम, मेरी प्रायोरिटी डेट कौन सी रहेगी? प्रायोरिटी डेट ऑफ योर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोविजनल फाइलिंग डेट. Any question in that? Hello. I hope it is clear to everyone. So hello. Yes. 9.1. Yeah. This section 9.1. If it is like abandoned, so it is not disclosed, right? I mean, it will be undisclosed provisional application, right? Yeah. It is not published. Provisional application कभी published नहीं होती. Yeah. Complete application ही published होगी आपकी. यहाँ जो हमारे पास लो. Ma'am,
अगर हम IP India के साइट पे जाए, वहाँ पे if we are searching for some topic, okay, and there is like whole lot of documents if we search for any particular patent, and if they have filed this provisional application earlier in time, so then also we are not able to see it. No, एप्लीकेशन पब्लिश होने के बाद पब्लिश एप्लीकेशन ही आपको दिखेगी. कभी भी प्रोविजनल एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होती है, और उसके जो भी मैटर्स है, जो भी आपने डिस्क्लोज किया है प्रोविजनल में, वो बिफोर फाइलिंग कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोविजनल एप्लीकेशन डिस्क्लोज नहीं होगी. बट पब्लिश होने के बाद बाकी दिखेगा क्या फिर? हाँ, बाकी दिखेगा कि आपने प्रोविजनल में क्या अप्लाई किया था. ओके. We are moving towards. In case if we are preparing some provisional specification, we have written a background and everything, so we can take that background for complete as well, right? We need not draft everything again. No. In the complete application, you have to followed by the provisional, you have to draft a claims summary, object of inventions. ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंशंस में कुछ लोगों की ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस में वो लोग इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं. दैट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट. एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. इस डायग्राम वगैरह भी दे सकते हैं क्या हम प्रोविजनल में? ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स रहेगा ना प्रोविजनल में आपका. ओके. इफ ड्राइंग्स है तो फ्लो चार्ट भी दे सकते हो आप. क्वेश्चंस देख ले एक बार. Which form we have to file for what? गीतांजलि जी, सॉरी गीताली जी. I think she's asking for that foreign filing license. Okay. For that, I have to check. It is covered in the section 39. It is covered in the form, so I have to check the forms. Just a moment. The form is there, ma'am. Just only the like a form name as a foreign filing permission. Yeah. I think it's form 25. Form 25. Correct. Done. Now, moving towards the section 9.3. That is anti-date of application. So section 9.3 क्या कह रहा है कि आप you have file a complete application, complete specification, right? Before 12 months of time, if you think that this application, I have to add some more things in my complete specification, then you can convert your complete application into the provisional specification. That is the antedating of the application. The complete application converted into the provisional application. Now, this provisional application, further you will get a 1 year of time for the complete application. See, where an application for a patent, not as a conventional or a PCT, is complied by a specification purporting to the complete specification, the controller may, if the applicant be request at any time within 12 months from the date of filing of the application, direct that such specification shall be treated for the purposes of the Act as a provisional specification and proceed with the application accordingly. Madam. Yes. Madam, one question, madam. Okay. An applicant files for initially a provisional application followed by complete specification. Okay, after 6 months, he again requests the controller to treat the complete specification as a provisional specification again. This rule says only that, or
what happens to the first provisional specification? It is abandoned or? So you are saying that if you have filed a provisional application and then you have filed complete application, right? And again, you have to convert your complete application into the provisional application. Yes. So you can do that. So your first provisional application, if the time of 12 months is still there, then only you can do this. Then the last date on which complete specification filed will be the first date of a new provisional specification, right? Correct, correct. A filing of the complete specification जिस दिन पे आपने file किया, that comes to your provisional date. Okay. 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 That is your filing date. Okay. Okay. Why it is known as anti-date? So this is the anti-date of the application. आप आगे कर रहे हो application को, मतलब before कर रहे हो आप extend नहीं कर रहे हो. That is the reason it is called anti-date of application, anti-dating of the application. Okay. Okay, madam. Okay. ये question जो है वो वाइवा में पूछते हैं. Ma'am, just for the sake of why we want to convert after filing the complete specification, we can request the controller at any time within the 12 months from the date of filing to convert that complete specification into provisional specification, taking that anti-date of the application. Why is there any particular reason, ma'am, why we want to shift this complete to PS? हाँ, इसमें क्या होता है कई बार आपने एक चीज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो भी आप डिस्क्लोज करते हो दैट विल नॉट गोइंग टू चेंज. आप उसमें कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हो until and unless it's a clerical error or something, right? So अभी मैं जो इन्वेंशन कर रहा हूँ, सपोज इन्वेंशन इज रिलेटेड टू ड्रग, अभी वो मुझे इन्वेंशन में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट मेरा रिजल्ट्स आने में अभी 2 महीने का टाइम लगेगा. ठीक है. बट मेरा जो टाइम पीरियड है, मैंने एक बार में फाइल कर दिया है, आई हैव मेंशन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, बट मुझे पता चला कि एनहांसमेंट दिख रहा है. तो एट दैट टाइम मुझे ये चीज भी मेरे एप्लीकेशन में ऐड करनी पड़ेगी. सो एट दैट टाइम में मेरी कंप्लीट एप्लीकेशन को प्रोविजनल की तरह ट्रीट करेंगे और उसके बाद मैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करूंगी बाय एडिंग न्यू रिजल्ट्स. You mean to say without disturbing the scope of the invention, or we can go for, or with disturbing the scope of the invention also we can add additional embodiments, can go for a PS specification? No, you cannot. The scope of inventions remains same in the two applications? Yes, your scope of invention remains the same. उसमें आप उतना ज्यादा ब्रॉड भी नहीं कर सकते हो और नैरो भी नहीं, नैरो कर सकते हो बट ब्रॉड नहीं कर सकते हो. But ma'am, we are treating CS to PS, right? Complete provisional. So we can still amend claims here, I guess. Claims we can amend, na, but we cannot disclose like कि next invention, दो invention एक में mix नहीं होने चाहिए, merge नहीं होने चाहिए. That is for the single invention only. And if you are disclose the scope in the provisional application, my limit is 10 to 20 or 20 to let's say 50. You cannot say that कि my particular component limit is 10 to 100. Oh. Okay, that is the scope, like playing for the particular drug molecule जो मेरा है वो 10 to 50 की रेंज में रहेगा. आप उसको नैरो करके 10 to 25 डाल सकते हो या 10 to 60 कर सकते हो, बट अब्रप्टली हाई नहीं कर सकते कि 1 to 100 की रेंज में वो रहेगा. ठीक है. Which option will be better, ma'am, instead of going for PS to CS to PS, taking the anti-date application, or else already you filed the CS application and add the patent of addition to that? Yeah, patent of addition, that's all. Yeah. Patent of addition भी हम कर सकते हैं. Patent of addition is for the, अगर आपका ये 12 months का टाइम चला गया है, so आपके पास एक ही ऑप्शन है, patent of addition. Okay. In that case, there is a patent of addition. Okay, you mean to say if you cross the 12 months, you can have the option of patent of addition. But if you're there already within the timeline, you can convert that CS into PS, taking the anti-date application and improve your invention. Correct.
इसमें दूसरा भी ये चीज हो जाता है कि आप अगर पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हो तो यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा फीस. So that but is I don't want to, but I'll not pay for the grant. If the patent get grant, my maintenance fee will not be applicable for both the applications, right, man? not the For both patent the of application. For the single application we have to, but your patent of addition is treated as the single applications only. You have to apply for the request for examinations also. Okay. So that is your additional, मतलब आपके bucket में एक और application add हो जाएगी. To say for the patent of addition, if you main application is there and child application is there. So advantage of the patent of addition is you don't want to pay the maintenance fee for the child application. Fee, yeah. Annuity fees pay नहीं करनी पड़ेगी. Okay. Now moving towards the post dating of the application. Makshi, hello, madam. Just 1 minute, one thing. In this like subsection 3 of this section 9, the priority date will be the first filing date only, na? Like whatever be it complete specification का जो first filing will be the priority date, right? Correct. Priority date आपने जिस दिन फाइल किया है complete application, वही आपकी priority date consider होगी if you are converting your CS into PS. Then okay. Ma'am, again, could you please clarify on this? If I'm in this case, if I am filing a provisional first, then within 12 months I am filing complete, and then like I want the controller to treat my complete as provisional. So I have to do it within 12 months, right? मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल देके. सपोज 1/1/2020 को मैंने 1 जनवरी 2020 को मैंने पीएस फाइल किया. मैंने उसका सीएस फाइल किया 1 जून 2020 को मैंने उसका सीएस फाइल किया. ठीक है. अभी मेरा जो सीएस है उसको मुझे पीएस बनाना है फिर से. तो मेरे पास 6 मंथ्स का टाइम है फर्दर. सो बिफोर 1 जनवरी 2021 मैं उसको पीएस में कन्वर्ट कर सकती हूँ. हेलो, या ठीक है. तो अभी मेरी जो प्रायोरिटी डेट है दैट इज माय फर्स्ट पीएस फाइलिंग डेट. हेलो मैम, that means जो 1 January 2020 will be the first priority date always for this application, right? Right. अगर मैंने CS फाइल किया है, CS लेट्स से कि मेरे पास 1 ही महीना बचा था और मैंने मेरी CS को PS में कन्वर्ट करना है, PS में कन्वर्ट करना है मुझे. सो मेरी CS फाइलिंग की जो डेट है दैट इज माय प्रायोरिटी डेट for the next PS. मैम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस डालनी पड़ती है? Provisional specification contains your title, field of invention, background of invention, and detailed description, and additionally the advantage. Okay, ma'am. And complete specification means all over specification about the invention. Correct, everything. But ये section 9(3) जो है that is only for the complete application को ही आपको provisional में कर सकते हो. वो provisional को complete करके complete को फिर से provisional नहीं कर सकते हो इसमें. Okay, ma'am. मुझे लग रहा है ये confusion हो रहा है इधर. हाँ, ma'am. क्या? It is clearly state that this is for CS only. CS only, purporting to the complete specification only. Within 12 months of time, you can direct to the controller to convert this application to the PS. This is related to CS only. And that means कि anti-dating of application में priority date वही रहती है जिसमें हम जिस दिन में हमने provisional specification फाइल किया था. CS फाइल CS किया था. CS किया था. Okay. So now moving towards the post dating of the application.
So, Very complete. hello. हाँ जी. Sorry, हाँ, sorry. बोलिए, I mean, no problem. so final thing is like, in any chance, like, अगर हम CS को like we are converting into provisional specification, so we are getting like some extra time. Is it like that for Yeah. filing? अगर मेरी PS में कन्वर्ट की है मैंने इसको, so Yeah. I still have 12 months of time Okay. for filing the CS. Yeah. So additionally I get the time. I'm buying the time. Yeah. Right. जैसे हम Right. PCT में करते हैं. Correct. इंडिया में प्रोविजनल फाइल करते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट अ रैंडम केस कि इंडिया में मैंने एक प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की. अभी विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम में इंडिया में फाइल नहीं कर रही हूँ एप्लीकेशन, मैं इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ. बट जो मेरी प्रायोरिटी डेट है वो इंडिया की है, प्रोविजनल की. एंड CS आई एम डायरेक्टली फाइलिंग इन द इंटरनेशनल PCT. Yeah. After the PCT report, I will enter into the India. Right. Within 30 to 31 months. Correct. So मुझे additionally 1 साल का time मिल गया. Okay. Ma'am, is So there just- any prescribed method to convert PS into CS? Sorry, PS CS into PS. CS into PS. By filing Form 30. By filing Form 30. Okay. But generally ये कोई करता नहीं है. Okay, ma'am. And is there any fees prescribed for this? मुझे check करना पड़ेगा. I will surely get back to you. Okay, right, ma'am. Thanks Right, for ma'am. this Thank question. I will mention in my diary. Right, ma'am. Right. Thank you, ma'am. Please from CS to PS. Okay. Now we are moving towards the 4th. That is a post dating of the application. Where a complete specification has been filed in pursuance of an application for a patent applied by a provisional specification or by the specification treated by virtue of a direction under subsection 3 as a provisional specification, the controller may, if the applicants who request at any time before grant of patent, cancel the provisional application and postdate the application to the date of filing of the complete specification. जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन आया था कि प्रोविजनल एप्लीकेशन पब्लिश होती है, इसके बाद प्रोविजनल पता जो हमारा दिखता है पोर्टल पे, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, पोस्ट डेटिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन का, दैट इज मेरा प्रोविजनल एप्लीकेशन है जो मैंने प्रायोरिटी डेट ली है उसको मैं कैंसिल कर रही हूँ, और मेरी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो मेरी प्रायोरिटी डेट में लगी. सो मेरी प्रायोरिटी डेट, सपोज मैंने 1 जनवरी 2020 को एप्लीकेशन फाइल की, उसका CS मैंने कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 को, तो मेरी प्रायोरिटी डेट 1 साल शिफ्ट हो गई. प्रोविजनल को कैंसिल किया और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को ही मेरा एक सिंगल एप्लीकेशन रखा. दैट इज द पोस्ट डेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन. Okay. Why do you want this post date application? Because everyone wants to enter the invention into the early stage, but we are post dating the application. Why we want to do such scenario? In that case, आपका जो स्कोप होगा प्रोविजनल का उससे ज्यादा ही आपने मेंशन किया है कंप्लीट एप्लीकेशन में. At that time you have to do this. I'm just stating the random cases. कि ये हो सकता है, बट जनरली कोई ये करता नहीं है, बट लॉ है तो उसमें एक प्रोविजन तो होना चाहिए. अभी दूसरा एक पोस्ट डेटिंग जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. दैट इज अगर आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो, आपका विद इन 1 year ऑफ टाइम यू आर अनेबल टू फाइल योर कंप्लीट एप्लीकेशन, राइट. सो एट दैट टाइम यू विल गेट फर्दर 6 months by further 6 months कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन. बट उस टाइम पे क्या होगा, आप जितने मंथ का एक्सटेंशन लोगे उतने मंथ आपकी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट शिफ्ट होगी. सपोज आई एम टेकिंग एक्सटेंशन ऑफ 2 months, 1 जनवरी से मुझे शिफ्ट करके 1 मार्च करना है,
2 महीने का एक्सटेंशन चाहिए फाइल करने के लिए, तो मेरी जो प्रायोरिटी डेट है दैट शिफ्ट्स टू द 2 months, जनवरी से मार्च में हो जाएगी वो। ठीक है, उसके लिए भी फॉर्म 30 फाइल करना पड़ता है, एंड द फीस इज 800 rupees फॉर द नेचुरल पर्सन एंड फॉर द लार्ज एंटिटी 4000 rupees. Okay. Ma'am, can you Now- just go to the previous slide, ma'am? Just go to the previous slide. मैम जो अभी आपने ये जो एग्जांपल बताया जिसमें हमने पीएस को सीएस में सीएस फाइल नहीं कर पाए तो हमने एक्सटेंशन लिया, ये मैम कौन से सेक्शन में था? सेक्शन ये 9 है आपका, 9(4). जी ठीक है, थैंक यू। ओके, इसमें मेंशन है, मैंने जो फीस बताई है वो कोई भी फॉर्म में मेंशन नहीं है, सो आप ये लिख लीजिए इसमें। फॉर्म 30 and fees for the natural person and small entity is 800 and for the large entity is 4000. And you can shift your priority date by 6 months. Yeah, but it's whether it's very easy to get this extension, or there should be some solid reason that okay, I was not able to do it in 12 months and now I require further. You have to request the controller. In the reasons you have to mention over that why you are post dating your application. Okay. Due to some experimental data or anything. Okay. Now we are discussing content of the specification. Specification में क्या क्या रहेगा? First, the application should have a title. Title is not more than 15 words. So every specification, whether provisional or a complete, shall describe the invention and shall begin with a title sufficiently indicating the subject matter to which the invention relates. That covers under Rule 7A, discloses your title should disclose the specific feature of the invention. Okay. Now, the second is about the drawing. Subject to any rules that may be made in this behalf under this Act, drawing may and shall, if the controller so requires, be supplied for the purpose of any specification, whether complete or provisional, and any drawings so supplied shall, unless the controller otherwise direct, be deemed to form a part of the specification, and references in this Act to a specification shall be construed accordingly. अभी ड्राइंग जो है उसमें कैसे रहेंगे, ड्राइंग कैसे फाइल करने हैं? You have to file drawings in A4 size paper with the margin described in the Rule 15. Your margin is top and the right on the paper, top and the right side 4 centimeter, bottom and the left, sorry, top and the left side 4 centimeter, bottom and the right side 3 centimeter. Drawings should be in a black and white format and there is no dimensions mentioned on it. Drawings does not cover any single words. उसमें सिर्फ आप numbering system दे सकते हो, and the parenthesis you have to give a reference in your complete specification. In case of flowchart, yes, you can write the words. Now the 3, model and a sample. Okay. So कई बार क्या होता है, कंट्रोलर डिमांड करते हैं कि उनको इन्वेंशन समझ में नहीं आया, आपने कुछ भी लिखा है तो
So at the time of hearing, they demand for the model or a sample of your invention. If any particular case, the controller considered that an application should be further supplemented by a model or sample of anything illustrating the invention or alleged to constitute an invention, such model or sample as he may require shall be furnished before the application is found in order for grant of patent, but such model or sample shall not be deemed to form part of the specification. जो भी आप मॉडल और सैंपल सबमिट करोगे वो आपका स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं रहेगा. That is the additional information that is required by the controller. Okay. Ma'am, here with respect to the first point, the title. So at the time of provisional specification, I have some title because I was initial stage of the invention. And after 12 months, I completely got to know the invention is. Can I amend the title with respect to the provisional and complete, or both the provisional and the complete will have the same title? No, you can amend your title, but उसकी जो subject matter है, उसमें आप change नहीं कर सकते. Suppose I am filing an application for the stapler. So I can say that additional storage with a stapler, or a method of making stapler with the additional storage. Sorry, additional word we cannot use in the title. So likewise, the subject matter को आप change नहीं कर सकते. But I can amend the title without paying any extra fee. No, without paying extra fees. At a time of complete specification, आप title ये amend कर सकते हो. अगर आपने mention किया है process of making something, उसके बाद आपको पता चला कि आप apparatus बना रहे हो वो, और मेथड उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आपका टाइटल उस तरीके से चेंज हो सकता है. एन apparatus ऑफ दिस एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस, आप ऐसे चेंज कर सकते हो. सो ड्राइंग पेज आपका कैसा दिखेगा, इस तरीके से होगा. ड्राइंग पेज जो आपका रूल 15 में मेंशन किया हुआ है. A4 साइज पेपर, फर्स्ट मैंने फ्लो चार्ट लिया है, सेकेंड इज द ड्राइंग, एक्चुअल ड्राइंग. सो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एप्लीकेंट नेम एंड एप्लीकेशन नंबर मेंशन होना चाहिए. ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, नंबर ऑफ शीट एंड शीट नंबर should be mentioned. At the bottom on the right side, applicant signature, और if आपने लीगल अटॉर्नी हायर किया हुआ है तो उनकी सिग्नेचर रहेगी. तो आपका ड्राइंग पेज ऐसा रहेगा. Ma'am, if in PS we are like my invention is about a process, and in case like in 6 months I'm getting some result where I can claim for a product as well. So in the complete specification, can I like improve the scope of that invention? Yes, you can add. Okay, so there might be a process claim and product claim as well. Yes. Okay. Correct. Likewise, we for can change this titles as well. Titles and everything. correct. Yeah. For your knowledge, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये प्रोडक्ट क्लेम है और प्रोसेस क्लेम है? जो भी प्रोडक्ट क्लेम रहेंगे वो नाउन से स्टार्ट होंगे, एंड प्रोसेस क्लेम शुड बी स्टार्ट विद द वर्ब्स. Okay. Right. Start with the method, right? That is verb. Method for producing, method for manufacturing. Can you like No, that? she's talking about claim, sir. Claims. Like claims. the first word of claim. How to identify this is a process claim or a product claim? If the claim start with the noun, that is a product claim, and if claims start with the verbs, then it's a method claim or a process claim. Okay. Now moving towards the
4 is every complete specification shall fully and particularly describe the invention and its operation or use and the method by which it is to be performed. B, disclose the best method of performing the invention which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection. आपका complete specification में क्या रहेगा? Fully and particularly describe the invention and the best method of performing your invention. For that, you claim the protection. Now, the complete specification ends with the claims or claims defining the scope of the invention for which protection is claimed. Claim should be from the new page. Sorry. Claim having the 3 parts. That is, first is preamble, transitional phrases, and body of the claim. Claim should be of the single sentence only. आप पूरा claim draft करोगे उसमें कहीं पे भी full stop नहीं आना चाहिए. At the end of the claim only there is a full stop. Okay. So what is a preamble? A preamble is the statement that generally हम title जो लिखते हैं वही claim में पहले लिख देते हैं. A process of making this or a product like this. What is the transitional phrases? We are using the word comprising of, consisting of, comprising, consisting, includes. That comes under your transitional phrases. What is the body of the claim? आप जो भी invention describe कर रहे हो, that is a body of your claim. Now coming towards the abstract. Abstract provides the technical information of the invention. That should be 150 words only, not more than that. Abstract में क्या क्या cover होगा? That is the summary of your specification, technical field, and advancement compared to the existing knowledge. अगर आपका invention chemical formula related है या तो फिर कोई drawings है उसमें, so आप उसमें abstract में add कर सकते हो. That covers under ये जितने abstract का जो भी description है, that falls under rule 37B. Madam. हाँ जी. Already we are supplementing with drawings. And in the abstract, can we again have to give drawings or refer the drawing? Actually, आपका जो invention रहता है, अगर आपने कोई apparatus claim किया हुआ है, so at that time आपको एक figure publication के लिए दे देते हैं abstract के नीचे, figure 1 for the publication करके. So उससे आपका invention easily understood हो सकता है कि कोई भी आपका abstract पढ़ के समझ जाएगा कि invention कौन सी field में है और क्या technical enhancement है उसमें. So that is the reason हम लोग drawing भी provide करते हैं abstract में. No reference to the drawing, right? Only new set of drawing. Only single set of drawing. Like only figure 1. If you are mentioning the see, suppose this is my invention. अभी इसके बाद मैंने 107 को भी अलग से दूसरे drawing में cover किया हुआ है, right? So मैं ये वाला जो drawing है figure 1 है मेरी, उसको मैं publication में दूंगी कि this information stating that the invention is related to the stapler. Okay. Okay, madam. Limitations which you mentioned about the each section, will it be applicable for both US and EP laws also, or only the 150 words as abstract will be applicable for only Indian patent law? Only Indian patent law. This is, we are talking about only Indian patent law. Correct, Indian patent law. But if I make the abstract without more than 150 words, will it be a controller may ask for reject the few of the words, or we have to pay extra fee for that increase the number of words in the abstract? None. There is no provision to increase the words in abstract. Controller straight away says that make your abstract 150 words. You amend your abstract. An abstract should be on a new page.
it contains the title and followed by the summary of your invention. Understand. Now, provided that, continuing with the abstract, the controller may amend the abstract for providing better information to the third party. If the applicant mentions a biological material in the specification, which may not be described in such a way as to satisfy clause A and B, and if such information is not available to the public, the application shall be completed by depositing the material to an international depository authority under the Budapest Treaty, and by fulfilling the following conditions, namely. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको, आप कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल यूज कर रहे हो, वो चीज को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. In India, there is a two depository body, that is MCC and MPCC. MCC is a microbial cultural collection, that is in Pune, and MTCC is a microbial type cultural collection and gene bank, that is in the Chandigarh. So इसमें आपको जो भी आपने बायोलॉजिकल मटेरियल बेसिस पे इन्वेंशन किया है, that you have to submit over there. और उसका रेफरेंस, आपने जो सबमिट किया है उसका रेफरेंस भी आपको आपके स्पेसिफिकेशन में मेंशन करना पड़ेगा. The deposit of the material shall be made not later than the date of filing. आपका जो भी डिपॉजिट है, मटेरियल डिपॉजिट किया है आपने इधर इन पुणे और इन चंडीगढ़, वो आपको एप्लीकेशन फाइल करने से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. And the reference should be made in the specification. The deposit of the material shall be made not later than the date of filing the patent application in India, and the reference thereof shall be made in the specification within the prescribed period. All the available characteristics of the material required for it to be correctly identified or indicated are included in the specification, including the name, address of the depository institute, and the date and the number of the deposit of the material at the institution. Access to the material is available in the depository institution only after the date of the application of patent in India, or if a priority is claimed after the date of the priority. Disclose the source and geographical origin of the biological material in the specification when used in an invention. Now, the 4A is stating that. Ma'am, this will also include this national biodiversity. So some MBA permission MBA. has to be taken. So this comes under that, right? This is different. Okay. This is different. So you have to mention this to depository body. Maybe This is only for microorganisms, I guess. Microorganism, yeah. Okay. This question may ask in the Viva. What is the depository body? Okay. And ma'am, where is this NBA related section then? NBA related section. In case I'm procuring any plant related material for my invention, at that time I have to notify that as well. For that you have to take a permission from the NBA. There is an application Yes. that is completely separate thing. Okay. That is completely separate one. Okay. This is So in Chennai. Is there any section related to that? NBA related thing? I guess 99% nahi hai, but I will check this question too. Okay. 99% नहीं है because recently मैंने 2 NBA permission के लिए apply किया हुआ है. But there is not a specific. Is that like the D1, disclose the source and geographical origin, because we usually do that of the biological material. Okay. Okay.
Right. Now, moving towards the 4A. In case of an international application designating India, the title, description, drawing, abstract, and claim filed with the application shall be taken as the complete specification for the purpose of this act. इंटरनेशनल एप्लीकेशन में ये सारी चीजें मेंशन होगी और वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की तरह ट्रीट होगा. Now, coming towards the claims, the claim or claims of the complete specification shall relate to a single invention or the group of invention linked so as to form a single inventive concept. Sorry, shall be clear and succinct and shall be fairly based on the matter disclosed in the specification. मतलब single inventive steps होना चाहिए और it is related to single invention. 6 is stating that declaration as to the inventorship of the invention shall, in such cases as may be prescribed, be furnished in the prescribed form with the complete specification or within such period as may be prescribed after the filing of that specification. यह है आपका inventorship declaration, that is form 5, that you have to file with the application. If you are failing to file that, you have to file form 4 within 1 month of timeline with the fees. That is already mentioned, 480 for the natural person and for the large entity 2400. So आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उसमें फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 4 सॉरी फॉर्म 5 फाइल करना पड़ेगा आपको एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग. Subject to the foregoing provision of this section, a complete specification filed after a provisional specification may include claims in respect of development of or addition to the invention which was described in the provisional specification, being developments or additions in respect of which the applicant would be entitled under the provision of section 6 to make a separate application for a patent. सपोज आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन में कोई चीज डिस्क्राइब की है बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते वक्त आपका स्कोप बहुत ही ब्रॉड हो रहा है. स्कोप is going to increase after at a time of filing complete specification. Then what can you do? You have to apply for a different application, separate patent application. Okay. Now we're talking about priority dates of the claims of the complete specifications. Madam, one small question, madam. The previous point. Previous slide. Yes. Section 7, subsection 7. Section 7 में या फिर subsection 7 में question आपको? Subsection 7. In the subsection 7, under section 10, madam. Under section 10, subsection 7. Okay. Just now we discussed. बताइए. Subject to foregoing provisions, the complete specification filed after provisions may include claims in respect of developments or addition to the invention which is described in the provision, being developments of addition in respect of which the applicant will be entitled to make a separate. That means patent of addition or patent of you can file a separate patent application individually. Ordinary application, it will be treated as not under a single invention, right? नहीं, मैं इसको समझाती हूँ आपको. मैंने प्रोविजनल में कुछ मैटर डिस्क्लोज की है. अभी मुझे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते टाइम पे मेरी मैटर चेंज हो गई है या तो फिर मुझे कुछ और इन्वेंशन मिल गया है.
राइट? Yeah. तो एट दैट टाइम मैं प्रोविजनल का कंप्लीट एक फाइल करूंगी, या तो फिर मैं प्रोविजनल को लैप्स करके दूसरी एक कंप्लीट एप्लीकेशन ही फाइल कर दूंगी. So we can scrap the earlier one and file new fresh, right? Yeah, because the scope of the provisional application is increased at a time of filing complete application. Okay. In that case, we have to apply for the separate application. Okay, that means the earlier application is abandoned. Correct. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, if inventors are filing the patent application, in that case, have they need to file the Form 5? Which application? For provisional If application. inventors, no, ma'am, complete application. At If that time, inventors, file a, if inventors are filing the patent application, they are the applicant. So in that condition, also they have to file a Form 5. Okay, in that case, they have to file the Form 5. Okay. Form 5. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And अगर मैम वो फाइल नहीं करते हैं, so within 1 month of time, by filing Form 4 आपको वो फाइल करना ही पड़ेगा. और अगर वो फाइल नहीं हो रहा है, अभी भी आप भूल गए हो, तो एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको पिटीशन के साथ फाइल करना पड़ेगा Form 5. ओके, वो पिटीशन के साथ हमें फाइल करना पड़ेगा. हाँ हाँ. ओके ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. 2 मिनट का ब्रेक ले लें हम. Back in 2 minutes. Yes, ma'am. 2 minutes. Ma'am, could you please repeat 10-7, like after the break, please? Okay. Thank you, madam. Yeah. I will be back in 2 minutes. Yes. Section 7. Sorry, 10, subsection 7. Hello? Yes, ma'am. Yeah. I'm explaining the section 10, subsection 7 again. Yes, ma'am. हम फिर से ये पढ़ते हैं, तो देखिए. Subject to the foregoing provision of this section, a complete specification filed after the provisional specification may include claim in respect of developments or additions to the invention which was described in the provisional specification. इतने तक हमें क्लियर है कि कोई भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो रहेगा
उसमें प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में जो भी स्कोप होगा या तो फिर उसका जो डेवलपमेंट रहेगा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से वो मेंशन किया होगा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में. Now, being developments or additions in respect of which the applicant will be entitled under the provision of section 6 to make a separate application for a patent. इसका मीनिंग ये रहेगा कि अगर आपका प्रोविजनल का स्कोप जो है वो बढ़ रहा है, आपको और भी चीजें डिस्क्लोज करनी है, या तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है आपका जो प्रोविजनल एप्लीकेशन का स्कोप ब्रॉडन हो गया है, एट दैट टाइम आप एक सेपरेट कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए एज कंपेयर टू प्रोविजनल फॉलोड बाय द कंप्लीट एप्लीकेशन. Is it clear or Okay. मैम प्लीज मतलब दोबारा दो एप्लीकेशंस करनी पड़ेगी इसका मतलब. हाँ, आप 2 एप्लीकेशन कर दीजिए. उसकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली वो नहीं रहेगी, फिर जो पीएस फाइल किया है वो उसकी अलग प्रायोरिटी रहेगी जो करेंगे. आपको 2 एप्लीकेशन सेपरेट करनी पड़ेगी बिकॉज आप प्रोविजनल में जो डिस्क्लोज किया है उसका डेवलपमेंट ही आप कंप्लीट में क्लेम कर सकते हो. अब यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप of the provisional application. Okay. And in this case, the priority date when it is decided? The priority date for the separate application is the date of filing of the application. Okay. 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 Now, priority date of the claims of the complete specification. There shall be a priority date for each claim of the complete specification. Where a complete specification is filed in pursuance of a single application accompanied by a provisional specification, a specification which is treated by virtue of a direction under subsection 3 of section 9 as a provisional specification. And the claim is fairly based on the matter disclosed in the specification referred to in the clause 1 or B. The priority date of that claim shall be the date of filing of the relevant specification. अभी ये क्या कह रहा है कि हर एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के क्लेम्स रहते हैं उसको प्रायोरिटी डेट होती है. अभी प्रोविजनल से आपने कंप्लीट किया तो उसमें प्रायोरिटी डेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि जो भी मैंने प्रोविजनल में डिस्क्लोज किया वो कंप्लीट में आ गया मेरा. सो मेरी प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम रिमेन द सेम एज अ प्रोविजनल फाइलिंग डेट, राइट. अभी आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल किया है अंडर सेक्शन 9(3). 9(3) में क्या था कि मल्टीपल ऑफ इन्वेंशन को आपने एक में कर दिया. यू आर फाइलिंग, एक सेकेंड लेट मी चेक. 9(2) शायद मैम. 9(2) हाँ 9(2) is 2 or more application cognate. या 9(2) में आपका जो भी 2 से ज्यादा एप्लीकेशन को कॉग्नेट किया तब आपकी जो प्रायोरिटी डेट है क्लेम्स की, हर एक क्लेम की जो आपने प्रोविजनल फाइल किया होगा वो प्रायोरिटी डेट कंसिडर होगी. सपोज वन मैटर डिस्क्लोज्ड इन फर्स्ट प्रोविजनल, suppose ABC, there is a 3 provisional application and I have filed 1 complete application. In the claim 1, 2 and 3 I have disclosed the matter A, B and C. Now the first provisional application, that is A, the matter disclosed in that provisional application in the complete specification, the claim 1 disclosed the same matter, then the priority date of claim 1 is the same as the first provisional. At the same way, if B matter disclose कर रहा है आपका claim number 2, then claim number 2 की जो priority date है that is the provisional application B जिसमें B matter disclose हुआ था. Similarly, ऐसे उसकी priority date claims की रहेगी. ठीक है. मीनिंग कि हम तीनों की फिर डिफरेंट प्रायोरिटी डेट्स हो जाएगी. हाँ, क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट डिफर होगी इसमें. थैंक यू. अभी ये जो बोल रहा है
subsection 3 of section 9. That is antedating. If I'm not wrong, this is antedating. Hearing claims mean independent claims? Sorry? So you said that all the claims have a certain priority date. So basically, these are independent claims or dependent claims as well? आपने जो भी वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. That can be anything. Okay, thank you. Section 9(3) is the antedating. इसमें डेट ऑफ फाइलिंग कौन सी रहेगी? Specification date which on, is treated. Date on which CS is filed. CS is filed, correct. That is our date of filing of the particular claim. 3 says that where the complete specification is filed or proceeded within pursuance of 2 or more applications that we have discussed, that is 9(2), section 9, subsection 2. 2 or more application accompanied by such specification as are mentioned in subsection 2, and the claim is fairly based on the matter disclosed. In one of those specifications, the priority date of that claim shall be the date of the filing of the application accompanied by that specification. Partly in one and partly in another, the priority date of that claim shall be the date of the filing of the application accompanied by the specification of the later date. Um, 3A says that where a complete specification based on the previously filed application in India has been filed within 12 months from the date of that application and the claim is fairly based on the matter disclosed in the previously filed application, the priority date of that claim shall be the date of the previously filed application in which the matter was first disclosed. Right. Now, where the complete specification has been filed in pursuance of a further application made by virtue of subsection 1 of section 16. Section 16 हम कल discuss करेंगे. And the claim is fairly based on the matter disclosed in any of the earlier specification, provisional or complete, as the case may be. The priority date of the claim shall be the date of the filing of that specification in which matter was first disclosed. Section 16 क्या है? Divisional. That is a divisional application. So divisional application की जो डेट है वो आपका प्रायोरिटी जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है वहां से उसका जो डिवीजन हुआ है, तो प्रायर एप्लीकेशन पेरेंट एप्लीकेशन की डेट रहेगी. दैट इज द डेट फॉर दैट डिविजनल एप्लीकेशन. Where under the foregoing provision of this section, any claim of a complete specification would, but for the provision of this subsection, have 2 or more priority dates. The priority date of that claim shall be the earlier or earliest of those dates. Right. Now, in any case of which subsection 2, 3, above all the subsections do not apply, the priority date of the claim shall subject to the provision of section 137, that is international filing date, be the date of filing of the complete specification. That is the international filing date को हम consider करेंगे. The reference to the date of the filing of the application or of the complete specification in this section shall, in cases where there has been a post dating under section 9 or section 17, or as the case may be, and antedating under section 16, be a reference to the date as a post date or antedate. मतलब आपने अगर post date किया है
ये एंटीडेट किया है आपकी एप्लीकेशन को, तो वही वो जो डेट रहेगी, डेट ऑफ फाइलिंग, दैट इज योर प्रायोरिटी डेट. A claim 8 says that a claim in a complete specification of a patent shall not be invalid by reason only of the publication or use of the invention so far as claimed in that claim on or after the priority date of such claim. The grant of another patent which claims the invention so far as claimed in the first mentioned claim in a claim of the same or a later priority date. Complete. Just a moment. Huh? इसमें क्या रहेगा कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को इनवैलिड नहीं कर सकता इफ द पब्लिकेशन और यूज ऑफ द इन्वेंशन सो फार एज क्लेम्ड इन द क्लेम ऑन और आफ्टर द प्रायोरिटी डेट ऑफ सच क्लेम्स. अगर पब्लिश हुआ है कुछ भी इन्वेंशन का तो उसको आप इनवैलिड नहीं कर सकते आफ्टर द प्रायोरिटी डेट अगर वो पब्लिश हुआ है तो. And the grant of another patent which claimed the invention so far as claimed in the first mentioned claim that is not later than the priority date. Okay. Any questions? Ma'am, could you elaborate me the last point, ma'am? Section 11, subsection 8, ma'am. Subsection 8. Yeah. अगर हम subsection 8 देखें तो a claim in a complete specification of patent shall not be invalid. Invalid नहीं कर सकते by the reason is कि अगर वो already publish हो चुका है but वो priority date के बाद publish हुआ है. ठीक है, ये हम ये चीजें है ना वो एंटिसिपेशन में आएगी आपको कि कौन कौन सी चीजें अलाउ कर सकते हैं. ठीक है, सो ये पब्लिकेशन के टाइम पे बिफोर सॉरी आई नीड सम वाटर. जैसे हमने बोला कि पब्लिकेशन हुआ है बट वो प्रायोरिटी डेट के बाद हुआ है तो वो इनवैलिड नहीं कर सकते ये क्लेम्स को. एंड सेकेंड पॉइंट इज grant of another patent which claims the invention so far as claimed in the first mentioned claim in a claim of the same or a later priority date. Madam, the point B is not clear, madam. मैं उसके लिए एग्जांपल सोच रही हूँ बट मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा है. There are two claims for one single patent. That means that says there are two claims for one single patent, and the one which comes as a second claim will not be in a position to invalidate the first claim. That's what it means, correct? Almost correct this, but मेरे पास एक उसका example है that is mentioned in my diary. I have to check this. I will get back to you on this topic tomorrow in tomorrow's session for sure. मैं इसको मेरे टास्क में लिख देती हूँ 11/8. Okay.
Ma'am, could you please explain the divisional patent application? We are covering this in tomorrow session. That is Oh, okay, section ma'am. 16. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. So I will elaborate over that. Okay, okay, right, ma'am. Okay. एंड कल हमारे सेशन में पूरा आएगा पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, उसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा, डिविजनल भी आ जाएगा. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन? I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप एड्रेस कर सकते हैं. मैम एक चीज पूछना चाह रहे थे. जी. हमको अगर इंडियन पेटेंट सर्च करना है तो उसको किस तरह से सर्च करेंगे? क्या कोई डेमो आप दिखा सकती हो? इंडियन पेटेंट सर्च करना हो तो ठीक है. मेरी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ आपको. जस्ट अ मोमेंट. इंडियन पेटेंट ऑफिस वेबसाइट, पब्लिक सर्च, अगेन पेटेंट सर्च. यहाँ पे आप कीवर्ड कॉम्बिनेशन से आप सर्च कर सकते हो. सपोज मुझे टाइटल में चाहिए स्टेपलर, एब्स्ट्रैक्ट में चाहिए मुझे स्टोरेज, मुझे शायद एप्लीकेंट का नाम पता हो या कंट्री पता हो, उससे हम सर्च कर सकते हैं. ओके. अभी हमें दो ही एप्लीकेशन दिख रही है स्टेपलर के लिए, बेस स्टेपलर एंड बटन स्टेपलर. ओके. और मैम जैसे अधिकतर हमने ये देखा है कि जो ड्रग डिस्कवरी में होते हैं वो पेटेंट को फाइल करते हैं, बट दे डू नॉट रिन्यू द पेटेंट, तो पेटेंट अबेंडन हो जाता है. तो हाउ कैन आई चेक वेदर दिस पेटेंट इज स्टिल कंटिन्यू और इट इज ऑलरेडी अबेंडन? वो आपको एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है आपके पास? अभी तो नहीं है, हैंड ऑन नहीं है, पर है मेरे पास. ओके. तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालिए. मैं एक रैंडम एप्लीकेशन नंबर डाल रही हूँ. ओके. ये एप्लीकेशन ग्रांट है. चेक इन द ई रजिस्टर. सो ये एप्लीकेशन रिन्यू हुआ है 6th ईयर तक. ठीक है. अगर यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, अगर इनफोर्स वाला जो स्टेटस है वो अबंडेंट स्टेटस आ जाएगा इफ द एप्लीकेशन इज अबंडेंट. उन्होंने एन्युटी फीस पे नहीं की है तो. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अधिकतर वो लोग जो है वो पेटेंट नंबर लेकर के अपना सीवी बढ़ाते रहते हैं,
but they do not Hmm. because the patents are not potential, so they do not renew the patent. हाँ, उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, कई बार तो एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट भी फाइल नहीं करते हैं. Okay, just they take the patent number and that's making the series. या बट अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये रूल भी आया हुआ है कि कितनी अप्लाई की है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी ग्रांट हुई है वो इम्पोर्टेंट है. Okay. पर वो ड्यूरेशन तो लिखते नहीं है, जैसे सपोज 4 इयर्स तक हमने रिन्यू कराया मैक्सिमम और उसके बाद अबंडन कर दिया जब तक हमको प्रोजेक्ट में पैसा मिला. ये हो सकता है इनका. थैंक यू मैम ये मल्टीपल प्रायोरिटी क्या कंसेप्ट है? वो आपका लेटर चैप्टर्स में कवर होगा कि अभी हम सब लेने जाएंगे तो सब भूल जाएंगे. ये आपका उसका सेक्शन 11 से कुछ लेना देना नहीं है ना? 137 मेंशन किया हुआ है आगे सेक्शन 11 में, बट वो कंप्लीटली रिलेवेंट नहीं है. ओके ओके डन. सो कल मिलते हैं फिर. मैम एक जनरल क्वेश्चन है. हाँ जी. हाँ, ये मैम जैसे हमें ग्रांट हो गया है पेटेंट, ओके, तो हमें हर साल फिर उसको रिन्यू करना होता है क्या? हाँ जी, करना पड़ेगा अप टू 20th ईयर, 20 साल तक. अच्छा, 20 साल तक हमें उसको हर साल उसकी फीस देनी होगी? हाँ, आपको लगता है कि अभी मेरा इन्वेंशन ये काम का नहीं है, अभी मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है, आप अगर एनुअल की फीस देना बंद कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन टू पब्लिक हो जाएगी. दैट इज मतलब आपने पब्लिक के लिए ओपन कर दी है. वो फ्रीडम टू ऑपरेट में आ जाए, फ्रीडम टू ऑपरेट में वो आ जाता है. फ्रीडम टू ऑपरेट इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. डिफरेंट, ओके ओके. फ्रीडम टू ऑपरेट इज अ सर्च कि आप कहाँ पे आपको फ्री स्पेस है, आप उस पे काम कर सकते हो. अच्छा, ठीक है मैम. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू. Okay, done. So I will get back to you tomorrow for the section 11A and for the NBA too. मैम जैसे ये अभी हम लोगों ने इंडियन पेटेंट को सर्च किया है, वैसे यूएस और ईपी पेटेंट को भी ऐसे ही सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी पेटेंट की आप बात कर रहे हो? यूएस पेटेंट और ईपी पेटेंट और जापानीज पेटेंट. See, I suggest for the US patent and EP patent उनके पोर्टल पे जाके आप सर्च कीजिए. EP पेटेंट आप यूरोपियन पेटेंट ऑफिस पे करिए एंड यूएस पेटेंट यूएसपीटीओ में. या तो फिर यू कैन जस्ट सिंपल राइट द कीवर्ड्स इन द गूगल पेटेंट सर्च एंड यू विल गेट द रिजल्ट. तो उसमें हमको मालूम पड़ जाएगा कि वो अबंडेंट है या फिर स्टिल कंटिन्यू है. हाँ, वहाँ पे स्टेटस मेंशन रहता है. अच्छा, इसके लिए हम एक ऐसा होगा तो एक क्लास एक सेशन अरेंज कर लेंगे. हाँ मैम, फॉर द पेटेंट सर्च. थैंक यू मैम. That sure. Then see you tomorrow. Bye and thank you. Thank you, ma'am.